morning, good evening, good afternoon, everyone who's joining us digitally right now. Hopefully, whenever this session gets online. As you all know by now, we're celebrating amazing Pakistani women in science and technology and engineering in lieu of 11th February, which is National Day of Women and Girls in Science. Today, we have my very amazing senior, Anam Rathore. Hi, Anam. Assalamu alaikum. Kya haal hai aapka? Walaikum salam. I'm good. So nice to see you after so long. Likewise, absolutely likewise. Anam, for the benefit of our digital audiences, can you please introduce yourself as well as solar for her as well, please? Sure. As you just said, Ramlanika, my name is Anam Rathore and I'm based in Islamabad, Pakistan. Or I'm basically, I'm a climate change and women rights activist. Or I really like working on the intersectionality इसमें कि when we talk about climate change and how women and girls are more vulnerable to it. So that's like my mission in life. These are two things that I'm passionate about: climate change or women rights. So working on climate change और जब हम women rights के बारे में, girl rights के बारे में, education के बारे में बात करते हैं, so I knew people जो climate change activism में थे, and उनमें से एक हमारे साथ टीम में होते हैं आसिफ. This was actually his idea कि he is from I think एबटाबाद से हैं और उधर वो रूरल एरिया में भी रहे हैं, और ही न्यू कि खासकर गर्ल्स की एजुकेशन में कितने बैरियर्स होते हैं और कितने मसले होते हैं, एंड वी वर वर्किंग ऑन क्लाइमेट चेंज एक्टिविज्म. तो उन्होंने ये आइडिया किया कि व्हाई नॉट वी पुट लाइक सोलर पैनल्स हम गर्ल्स स्कूल्स पे लगाते हैं. उन्होंने कहा कि मतलब लिविंग इन द कैपिटल इस्लामाबाद, मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत प्रिविलेज थी. मैंने कभी होता है कि आई यूज टू लिव इन माई बबल, मतलब मुझे जो इनजस्टिस भी शुरू में नजर आता था, जब इतना नहीं पता था, तो मुझे लगता है कि मैं अपने बबल में ही दिखती. तो मुझे ये नहीं पता था कि ऐसी जगह हैं विच आर लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स है बट देर ऑफ ग्रिड, लाइक उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कुछ है ही नहीं. तो आप सोचें कि ऐसी जगहों पे कैसे जहाँ पे बच्चे कैसे जाके पढ़ेंगे, लाइक तो उसमें जब हम डिस्कशन कर रहे तो हाउ टू प्रमोट renewable energy. So we came up with this campaign called Solar for Her, jisme what we do is it's like we're all volunteers. It's a volunteer campaign and we do like grassroots funding. हम funds जमा करते हैं and we put solar panels जो हम लगाते हैं, वही मैंने कहा off grid जो areas हैं उनके girls school में या और places where there is electricity connection but it's like load shedding वहाँ होती है half of the day. So in a way we are sort of like हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं एंड वी आर एम्पावरिंग गर्ल्स कि अगर शायद उनको एक नई चीज वो स्कूल में देखें कि नाउ वी हैव फैंस एंड वी हैव लाइट्स, एंड कुछ जगहों पे हमने कंप्यूटर लैब्स उनकी सोलर पैनल से जो चल रही हैं. सो वी वांटेड टू इनकरेज देम कि वो एजुकेशन की तरफ भी जाएं, एंड वी थॉट कि एक शायद कनेक्शन हो कि मे बी दिस विल मेक देम क्यूरियस कि व्हाट इज दिस, कि ये कैसे हो रहा है, व्हाट इज, शायद वो उससे भी और आगे इस साइंस में और इसको और आगे इन द फ्यूचर वो लेना चाहे. Let me just say here that this is so inspiring. Kudos to you and your team and Asif Saab who came up with the idea. Zabardast, mashallah. I am so proud to know you. I've been doing it, I'll say probably a decade मुझे हो गया है, and I've seen the change. पहले कोई होता था climate march. I remember in 2015 I organized a climate march और मैंने they were like I think 100 मुश्किल से लोग आए थे, जिसमें से like 30% of them were my friends and family. तो उसके अलावा and then I was part of the team जिसने climate marches organize कराई थी in 2019, and we had like over 30 cities all over Pakistan, जिसमें Islamabad में we had like 5,000 people. So I've seen how especially young people, they are so passionate about climate change and you know action. तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि the new generation is super awesome, कि मुझे लगता है कि वो बचा लेंगे दुनिया को. और जब हमने ये कैंपेन भी स्टार्ट की तो इसमें ये था कि थोड़े से हमें शुरू में क्या मसला है कि एज आई सेड कि वी ऑल आर वर्किंग आवर सेपरेट जॉब्स, कुछ लोग स्टूडेंट थे, दिस वाज अ वॉलंटरी कैंपेन. तो हमने
फंड रेजिंग में, मतलब people are, especially here, people are very skeptic about डोनेटिंग मनी जब आप किसी को जानते नहीं हो, अगर आपके पास सामने एक प्रोजेक्ट ना हो. नाउ वी हैव डन लाइक हमने 9 स्कूल्स में लगा दिया है, वी हैव अ वेबसाइट, हमारे पास ज्यादा मटेरियल है, तो पीपल वांट टू डोनेट. तो शुरू में डोनेशंस जमा करना, और थोड़ी हमें भी थोड़ी शर्म आती थी लोगों से पैसे मांगते, तो एक वो था. ऊपर से where most of us are working or as students, तो हम बड़े शहरों में बेस्ड थे. तो फॉर अस लाइक वो नेटवर्क बनाना, क्योंकि यू कांट जस्ट लाइक, अगर हम जिस तरह हम आवर फर्स्ट स्कूल वाज इन मुजफ्फराबाद, पर उसके अलावा हमने एक चमन में भी किया है, एक हमने सिंध, इंटीरियर सिंध में भी हम कर रहे हैं. तो जस्ट लाइक हाउ टू रीच दोज प्लेसेस, जब आप सब कुछ वॉलंटियर कर रहे हो. एंड आवर फर्स्ट प्रायोरिटी वाज टू स्पेंड कम से कम पैसा ऑन अदर एक्टिविटी के ट्रांसपोर्ट, और उस पर वी कुडंट स्पेंड मनी, जब हमें लगता था कि हम इतने में एक स्कूल को आप सोलर पावर्ड कर सकते हो. So like getting this, I think the starting is always very difficult, जिसमें आपको give up नहीं करना होता. You have to be like, आपका एक अगर goal हो, you have to work like 200-300% in the morning, कि हमें volunteers ढूंढने थे लोगों से, कि vendor उधर ढूंढना था कि जो इस एरिया में जाए, उन schools को लाए, someone to explain it to them. वो सब करने में हमें connections बनाने में काफी time लगा, काफी मेहनत लगी, कुछ जगहों पे काफी disappointment भी हुई, but we just kept on going because we knew कि ये हमारा मिशन है. हमने एटलीस्ट हमारा टारगेट है 30 schools, so we still have 21 to go, but वो टारगेट हमने अपने दिमाग में रखा हुआ था, and बस हम we kept on going. So आज it's going really well now, क्योंकि people are reaching out कि हम donate करना चाहते हैं. Sort of like आपका ग्राफ ऊपर जाता है, कि शुरू में you have to work a lot and you're like, आपको बहुत hurdles आते हैं, you feel frustrated कि क्यों नहीं हो रहा, थोड़ी disappointments भी होती है. But if it keeps on going, अगर आप मेहनत करते रहो, तो then it makes you so happy when you actually see the result. Like we just did a school in Islamabad, हमने किया वो, हमें एक international NGO, they were shifting their office and they reached out to us कि हमारे solar panels आप लोग जो है ना, it was like a 7 kilowatt के, that is a lot, कि वो आप ले लें. And then we took it from them and then we reached out to a school in Islamabad में. It's like a school from I think 1 to 12th grade, like college तक है. And then जब हमने उसको लगाए, so the students there were so curious, because especially like 9, 10th, 11th, 12th के, and they were like, उनको हमने बुलाया और बताया, and we were like, this is something we should talk to the students about too, कि anyone can do this, you can be an engineer जो इस पे फ्यूचर में काम कर सकता है. वो जो क्यूरियोसिटी होती है यंग स्टूडेंट्स की, तो वो बहुत हुआ कि, and now their whole school is all solar, मतलब वो कोई वापडा से इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले रहे, एंड इंक्लूडिंग लाइक उनकी कंप्यूटर लैब्स एंड 3 ACs भी उनके उस पे चल रहे हैं. Anam, I want to bring the conversation a little bit to you. What was your journey towards science? Growing up, I was like, I was very inquisitive and curious. I liked science, but as you said, my career path set by my parents was medical. Like, especially my dad, he was like, I'm the eldest, so बस यही था कि डॉक्टर बनना है. And I don't know, it never वो होता ना कि मुझे था कि बस I don't want to be a doctor. I was like, ये क्या लाइफ है, हॉस्पिटल जाओ, और अब तो मैं सोचती हूँ कि I can't see blood, ये तो शुक्र है मुझे अब पता चला कि, but तो what I did, which I would say कि young लोग मुझसे ना सीखें ऐसी बात, but I was in 11th 12th grade में, मतलब my dad got really strict कि टीवी भी नहीं देखना, सिर्फ पढ़ाई. So the only way out I thought was like, what if I don't study for like my 12th grade result, और मेरा अच्छा result ना आए, तो मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलेगा. So which I think in the long run ऐसे नहीं करना चाहिए. मतलब we should, I feel like parents में शायद I've seen it change कि parents ये देख रहे हैं कि you should study what you're interested in, cause I've seen so many people right now जिनको जबरदस्ती parents एक field पढ़ा देते हैं, but after graduating and a few years of work they completely change it. And I hope future में ऐसे हो. और but yeah,
but I love biology. मुझे biology was like something कि मुझे लगता I used to think that this is real science, like biology जो है वो असल हो रही है, बाकी चीजें आपको नजर नहीं आती. So and I was like थोड़ा मैं social justice में शुरू से थी और मुझे तो I decided to study environmental sciences. And yeah, it was like जब मैंने पढ़ी I loved studying about it. और like right now my work is in advocacy और हम कैसे थोड़ा पॉलिसी लेवल पे आते हैं. बट व्हाट आई लाइक इज कि जब मैं इसमें बात करती हूँ तो ऑल माई स्टेटिस्टिक्स और जो मैं बात करती हूँ इट इज बैक्ड बाय लाइक द नॉलेज ऑफ साइंस. कि आई फील लाइक अ लॉट ऑफ द टाइम्स हम पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं, हम एडवोकेसी की बात करते हैं कि दीज पॉलिसीज हर चीज पे हमारी लाइफ पे इफेक्ट करती है. बट व्हेन यू नो द टेक्निकलिटी कि वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, वो साइंस क्या है उसके पीछे, तो दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग कि आप कि सही जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, कि आप तब एक डिफरेंट लेवल पे आप सोच सकते हो बिकॉज यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि चीज क्या है. सो आई एम रियली हैप्पी कि मतलब आई फील लाइक science is very important in a way that it has helped me in like pursuing what I really want to do. When I'm a climate change activist और जब मैं लोगों से बात कर मतलब when we're talking और हम करते हैं like on a project, तो I can actually understand कि climate science क्या है, how is it happening, the facts or projections और वो देख सकते हैं. तो it has actually helped me in my advocacy work and helped me in my like activism work. So that's amazing. That's absolutely amazing for us to be able to sort of link our education with reaching out to people. I think that in itself is a science. I mean, just yesterday we saw the drastic events of the flood in India because of the sudden meltdown of the glacier, and it sort of jolted me I'm actually that's the project in Pakistan ka jo hai, that's what I'm working on. That how because of climate change the glaciers are melting, and they're Pakistan ke the Himalayas and Hindu Kush mountain ranges, they're called the third pole because this is the third like largest ice cover jo hai earth ke upar. And that's that. And if you look at it, how are like isi ka water melt hoke Indus mein aata hai, so many like even till Sindh, like so many livelihoods, hamara agriculture, it depends on it, and there's so many communities that live around it. So मैं उसको sorry I just like science का मैं सुनती हूँ, मैं explain करना चाहती हूँ. तो what is happening because of climate change, तो हमारे glaciers are melting, but what is happening कि when they melt you can't see it from the top of the glacier like जो लोग वहाँ रह रहे हैं, it's actually melting at the bottom and lakes are forming there. And what happens that these lakes वो फट जाती हैं, they're called GLOF, glacier lake outburst flood, and those floods you're like if you're living there you won't be able to tell कि वो कब आ रहे हैं, and when they come they can like वो पूरी village को बहा के ले जा सकते हैं. And a lot of places in like KP and also GB, like a lot of places in GB are vulnerable to these GLOFs. And it's like it's such a scary thing. And looking at like Pakistan, हमारी जो citizens हैं, there were like अगर हम global carbon production देखें तो our production is like is minute compared to so many other people, but our people are so vulnerable. And especially when these climate disasters come, the people who are most affected are also women and girls. वो आ जाते हैं जब बहुत सी जगहों पे खासकर गर्ल्स की एजुकेशन पे बहुत आ जाता है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स की चीजें खराब हो जाती हैं. और so this is like everything is so interconnected, like climate change and social justice and education. So it's just like people are being affected. Yeah. So इसमें लगता है कि बहुत एक्शन और बहुत आवाज उठाने की. We cannot talk about girls education अगर उनकी पूरी घर ही खत्म हो गया है and they have no place to live, तो उनकी तो future भी सारा खत्म हो रहा है. तो I feel like these things are so important and they're so like interconnected कि एक चीज से link बनता है. And For sure. I mean, especially in societies like Pakistan, agar hum, for example, if we go into schools and talk about STEM, conduct a lot of STEM subject outreach sessions across schools in Pakistan, it's not possible for us to ignore all the cultural and social barriers that we feel through. I mean, उस classroom में ऐसी बच्चियां भी होती हैं जिनको वालिदैन की तरफ से इंटरनेट यूजेज की इजाजत नहीं होती, या जिनके घरों में computer systems नहीं होते, या the only mobile
user or internet user is the father or the brother, and young girls are not allowed access to all of that. So you can't just walk into such a classroom and start teaching robotics to young girls, right? It's only bound to intimidate them further. तो बहुत दफा ऐसा होता है कि we go with a mindset of teaching math and science and physics and chemistry, but we end up just playing games with young girls and inculcating science in those games क्योंकि exactly like you said, there's so many layers and it's very multifaceted to do any sort of science related outreach or climate change related outreach or advocacy in Pakistan. Which brings me back to solar for her, Anam. What does future look like for solar for her? What are some of your very ambitious targets that you would want for Pakistan? So we just recently found out that KP is trying to make all its government schools solar. So I feel like that is such a good thing. Like KP is focusing so much on education and like renewable energy. So I feel like if it's not something we can do, but that's something I want to happen in all of Pakistan. कि हमारे सब schools solar हो जाएं, and we know our students know what renewable energy is, and maybe they'll want to like become engineers or just like manufacture solar cells, or just like it will make them curious about learning new things. So I think that is such a good step. And what I heard it's the plan of the next year, or KP is trying to do that, and I hope it reaches all villages and all remote areas as well, and then like all of Pakistan. So I feel like that is such an amazing opportunity for our young people to just like learn, and yeah, or also like get basic things like a light and a fan. Because हमारे पास यूजुअली जब लोग फॉर्म्स फिल करते हैं ना, कि वी आस्क देम टू फिल आउट अ फॉर्म, हमें स्कूल की पिक्चर्स भेजें कि व्हेन वी डिजाइन अ सिस्टम फॉर देम, कि मतलब कितनी क्लासरूम्स हैं, कितनी लाइट है, तो देयर लाइक 5-6 grades होंगे, like it's a middle school, और पर they're like 2 rooms in the class कि उसमें, and they're like कोई उसमें किसी में लाइट्स हैं बस, और टिन रूफ में रह रहे हैं, and the temperatures in those places are so high, and वो बताते हैं कि स्टूडेंट वॉक सो मच. सो आई फील लाइक कि एटलीस्ट वो एक जगह पे आएंगे जहाँ पे एटलीस्ट एक फैन हो, मे बी एक कंप्यूटर लैब में एक दो, अगर वी आर ट्राइंग, अगर हम कंप्यूटर्स भी हम वहां पे हो तो वो सोलर से चल जाएं, समवन डोनेट्स एन ओल्ड लैपटॉप, या वहां पे they'll have like maybe एक वाटर कूलर लगा हो जिस पे ठंडा पानी, तो they'll want to come to school. So I feel like this will in a way encourage them to come to school and learn more, and yeah, in the long run solar is just good. हमारा climate change के effects भी कम होंगे, and I'll just say like believe in yourself. And yeah, if it's young people, I already know you're going to do a lot. Like Generation Z, I am so hopeful. Like whenever I talk about young people, it just brings a big smile to my face, because I also mentor people on climate change, and I've seen their passion and their jazba, and how like they're into it from their heart, and because they want to see change. So yeah, just keep doing what you're doing, and keep believing in yourself and in your dreams, and work hard, and end may you'll get a positive result, inshallah. Thank you so much, Anam. Thank you so much for taking time out of your day. I know it's a bit late in Pakistan right now. I hope that through Women Engineers Pakistan, we can keep you involved. क्योंकि शोर मचाते रहना है ज़रूर बहुत ज़रूरी है for advocacy purposes to bring the conversation back to climate change, its adverse effects to women and girls, especially since Pakistan is one of the 10 countries most vulnerable to extreme weather events and the effects of climate change. Thank you so much for sharing your day with us, sharing your passion with us, and inspiring, inshallah, many, many young girls across Pakistan and abroad as well. Take care, stay safe. Khuda Hafiz.